there are two types of people in the world. We are making some contribution to McGrath Foundation. Hello and Namaste. I am the Guru Mahashay Tekchand Bareja. And I am Pramod Bareja. Today's episode is about Dussehra. It is also about regular PTSD awareness, donation awareness and exercise. Get regular, not serious. There are two types of people in the world. One is like my brother, Mr. Pramod Bareja, cool, calm and collected. A devoted family guy, dedicated to immediate family now, and brothers, sisters and parents throughout. There are two types of people in the world. One is like my brother, and the other ones who like to be like my brother. No third type. You know the saying, jack of all trades and master of none. If the saying was king and master of many trades, that would be him. In Hindi, there is a term, Harfan Mola. He is expert of air conditioning, electrical, plumbing and many more trades. He can fix anything and everything. In Sydney, he made effigy of Ravana 3 years in a row for the Dussehra festival. And in the recent years, he has been in charge to fix the Ravana effigy imported from India. भैया आप अपनी कुछ पुरानी यादों के बारे में बताएंगे दशहरे के बारे में। दशहरे मेले पर रावण दहन दिल्ली और दिल्ली के आसपास शहरों में देखा है। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब रावण जलने के बाद जली हुई 1-2 लकड़ियां उठाकर घर ले जाते थे। मान्यता ये है कि वो लकड़ी घर पे रखने से घर में कोई बुराई नहीं आती। और दशहरे के बारे में जो मुझे पुरानी याद आती है वो आती है जब दशहरे के मेले पे पिताजी मुझे अपने कंधे पे बिठा के दूर से रावण जलता हुआ दिखाते थे, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी। या जैसे झाई जी, माय मदर, जैसे झाई जी कहते होते थे, पब्लिक बड़ी थी। भैया जब सिडनी में आपका बनाया हुआ बुत जलाया जाता था तब आपको कैसी फीलिंग होती थी? रावण बनाने में महीनों लगते थे और काफी मेहनत लगती थी। कम्युनिटी के लोगों के सहयोग देने से ही सब काम होते थे। टेकचंद ने भी इस मामले में काफी सहयोग किया हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प तो मैंने भी की थी। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा ही लेते हैं। हाँ, ये तो सच में ही थोड़ी इंजरी हो गई, पर इट्स ओके। रावण जलने के टाइम यही लगता है कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। मेले में इंडियन कम्युनिटी, खास करके यंग जनरेशन, अपने कल्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। The burning of Ravana symbolizes the victory of good over evil. Truth is always victorious. The god Rama is role model. Ravana, the evil king, was powerful and learned too. Ravana's teaching at the time of his death were, never underestimate your opponent. Do good things ASAP. Do not tell your secrets to any. It's up to you to interpret what these preachings mean in today's context. अब एक रामलीला के दिनों की याद। मेघनाद, पिताजी जय शंकर की। रावण, बेटा जय शंकर की।
October is Breast Cancer Awareness Month, McGrath Foundation was founded by the cricket legend Glenn McGrath and his wife Jane. McGrath Foundation provides support and care to ones experiencing breast cancer. We are making some contribution to McGrath Foundation. Due to this minor finger injury, I won't be able to do 22 push-ups this week. Message is still same. Exercise, get regular, not serious. And here is what happened 5 years ago. Ali, I haven't got Hakuna Matata t-shirt today, but I'll sing for you. Hakuna Matata, it means no worries. So, everyone, don't worry, be happy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2. If you like the video, please like, share, subscribe, and comments are most welcome. Take care of self and all around you. Bye. Billy, why do you want to sit here?